Hello, and welcome to this PKL Season 8 auction review right here at Kabaddi Adda. आप सभी को स्वागत है. I've got Vikas Gautam with myself, Suhail Chandhok. We can't wait to get you started and talk about everything that we've seen over the big 3 days as well. So much money spent, so many players bought, and we've got to take a look at all the big buys. We'll also take you through each team one by one. But Vikas, welcome. How are you feeling? Yeah, it's going to be important to see how this entire auction went on. But firstly, let's take a look at all the highlights. क्योंकि अगर हम auction के बारे में हम बात करें तो there were several highlights to the entire auction. It was quite an amazing process overall. But maybe just taking you through all the best bits of the auction because there were some big buys, huge buys overall in terms of what we saw. Of course, Pardeep Narwal was the biggest of them all at 1.65 crores. But let's just take you through the rest of it as well as we go past the entire auction. How much money was spent? What was really the highlights of the auction for you, Vikas? Because for me, it was not only Pardeep Narwal's 1.65, but also certain teams that were going after smaller players rather than big ticket names, right? Rahul Chaudhary, अगर हम देखें या दीपक निवास हुड्डा देखें या अजय ठाकुर या तो Monu Goyat who went unsold initially, Rishank Devadiga went unsold initially. One thing is clear कि सारे teams and that for me was the biggest plus coming into this auction. नो डाउट जिस तरीके से हमने इस ऑक्शन में ये देखा कि बड़े खिलाड़ियों को जिस तरीके से टीम्स ने इग्नोर किया है और यंगस्टर्स पे भरोसा किया है उन्होंने इस बार, तो ये एक बिल्कुल अलग चीज हुआ इस सीजन 8 के ऑक्शन में. और जैसे अभी भी इनफैक्ट अभी भी कुछ एनवाईपीज टीम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिनके नाम अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं. अभी जैसे अगर गुजरात फॉर्चून जायंट्स की बात करें, उनके अटैक की बात करें, तो ऑक्शन में तो हमें कुछ देखने को नहीं मिला, लेकिन क्या पता अभी जो नए एनवाईपीज उन्होंने खोज के रखे हुए हैं उनके नाम जब वो अनाउंस करें तो हमें कुछ नया देखने को मिले. बहुत सारे यंगस्टर्स आने वाले हैं सीजन 8 में, उसकी पूरी की पूरी उम्मीद है. और हमने ये ऑक्शन में भी देखा कि कैसे टीम्स ने दांव खेला है यंगस्टर्स पे, चाहे वो अर्जुन देशवाल हो चाहे वो मंजीत हो. Yeah, I think really important to therefore understand, because across the 2 days, a total of 32.7 crore rupees was spent. And I think that is a huge number in the auction. We also saw records tumbling. The record breaker Pardeep Narwal went for 1.65 crore rupees. We all expected him to be the biggest buy of the auction, but we were all wondering what that number would be. And I think, sorry about the graphics, they are popping in and out. But, we saw Pardeep Narwal for 1.65 crores, the highest ever bid in the history of the PKL auction. Apart from Pardeep, Siddharth Desai was the only other crorepati. And maybe Vikas, अगर बहुत लोग ऑक्शन को देख रहा था तो दे वर मे बी एक्सपेक्टिंग मोर करोड़पति टू कम थ्रू, लेकिन सिर्फ 2 करोड़पति इस ऑक्शन से, एक तो प्रदीप नरवाल, दूसरे सिद्धार्थ देसाई. अगर बात करोड़पति की करें तो इनफैक्ट मुझे तो एक बार को ये भी डर लगा, जैसे शुरुआत हुई दीपक निवास हुड्डा से, तो मुझे कहीं ना कहीं ये डर था कि सिद्धार्थ में भी कुछ करेक्शन देखने को नजर मिलेगा. और इस बार जो दूसरी चीज रही, टीम्स ने उन प्लेयर्स को ही लिया है जिनका कुछ डेटा था, जिनका कुछ डेटा कहीं कबड्डी अड्डा जैसे वेबसाइट्स पे अवेलेबल था या किसी टूर्नामेंट्स में उन्होंने खेला हुआ था. इन्हीं प्लेयर्स को टीम्स ने लिया है. और यहाँ पे सिद्धार्थ देसाई जो हमारे पहले करोड़पति, उसके बाद आए प्रदीप नरवाल. और अगर बात करें तो कुल 131 प्लेयर इन 3 दिन के ऑक्शन में 12 टीमों के द्वारा खरीदे गए हैं, जिसमें 19 कैटेगरी ए के प्लेयर्स और 26 कैटेगरी बी के प्लेयर. और सी कैटेगरी जहां पे सबसे ज्यादा हलचल थी, कुल 76 खिलाड़ी और 6 खिलाड़ी जो एज एनवाईपी डी कैटेगरी में थे, उसमें से टीम्स ने लिया. सुहेल, तो आप क्या बोलना चाहेंगे जो हमारे कैटेगरी सी में जो इतनी हलचल थी, जहां से 76 प्लेयर्स को टीम ने लिया?
या आई थिंक जैसे मैंने पहले कहा था विकास, एक आइडिया और एक स्ट्रैटेजी अब पूरे हो गए कि सारे टीम्स बिग नेम प्लेयर्स के लिए नहीं जा रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर यंगस्टर्स जिसको वो ग्रूम कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारी टीम को इस बार देखें तो वो मनी बॉल स्ट्रैटेजी बहुत लोग यूज कर रहे थे। अगर इवन यू लुक एट अ टीम लाइक यू मुंबा सीजन 2 का जो चैंपियंस रहा, दे हैव लुक्ड एट अ वेरी यंग टीम और उनको मनी बॉल यूज करके हाउ कैन वी क्रिएट स्टार्स। अगर पिछले सीजन भी देखे जाएं तो गाइज लाइक मंजीत, श्रीकांत जाधव, सिद्धार्थ देसाई, अभिषेक सिंह, ये जो प्लेयर्स था, दे वर वेरी यंग प्लेयर्स हु नो वन न्यू अबाउट। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ टीम्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ स्काउटिंग वर्क। नेशनल्स में देख रहे थे K7 कबड्डी अड्डा के K7 से प्लेयर्स ला रहे हैं। So I think that's the strategy going forward, and I think that's what we have to talk about. We should go into the K7 youngsters also that were picked up in this league, because I think very important to see where the young players were coming out of, and understanding really the opportunity that exists, because I think now the days of big name brands are gone. Manjeet Chiller, Ajay Thakur जैसे players, या तो राहुल चौधरी जैसे player, या तो दीपक निवास हुड्डा भी, who is the Indian captain, वो भी सिर्फ 55 lakhs के लिए गए। तो आई थिंक द स्ट्रैटेजी इज नाउ take young players, groom them for the future, and then hold on to them. So I think that's going to be the strategy. But a very proud day for all of us at Kabaddi Adda, Vikas, because K7 से youngsters भी गए, and तीन लोग अभी तक, तीन young players, एक तो विकास, एक मोहित गोयत और एक रोहित राघव, तीनों ने 6 लाख के लिए एक गुजरात जायंट्स, एक पुनेरी पल्टन और एक तमिल तलाइवास ने लिया। और इन तीनों खिलाड़ियों की अगर बात करें तो हमारी पहले से नजर थी, अगर याद होगा सुहेल, तो हम लोग अक्सर मोहित गोयत के बारे में बात किया करते थे, जो अभी पुनेरी पल्टन के द्वारा खरीदे गए हैं। और बात करें रोहित राघव की भी, तो लंबे कद के बहुत ही शानदार रेडर हैं। ये तीनों युवा खिलाड़ी, चाहे वो विकास हो, मोहित गोयत हो, रोहित राघव हो, हमें टूर्नामेंट के दौरान ही, K7 टूर्नामेंट के दौरान ही बिल्कुल ही रेडी देखे थे बड़े शो के लिए, और उन्हें ये मौका मिल गया है अभी। अब देखना यह है कि आने वाले 3 महीने जो होंगे, सीजन जब शुरुआत होगी जब सीजन की, तो सबकी निगाहें इन यंगस्टर्स पे होगी। और जैसा कि इस ऑक्शन में हमें बिल्कुल क्लियर दिखा कि टीम्स, जैसा कि आपने भी अभी बताया सुहेल, कि टीम्स ये नए यंगस्टर्स के साथ जाना चाहते हैं, युवा खिलाड़ियों के साथ जाना चाहते हैं, उन बड़े नाम के पीछे भागना नहीं चाहते। और सुहेल, अगर आपको याद हो तो आपने उस दिन बोला था कि कैसे प्रदीप नरवाल के साथ अगर टीम्स क्यों काम करना चाहती हैं, क्योंकि बहुत ईजी है उनके साथ काम करना। तो कहीं ना कहीं टीम सब ये भी देख रही हैं कि किन खिलाड़ियों के साथ हमें काम करने में सहूलियत होगी, हु आर इजी टू वॉक, और उसमें ये करेक्ट। युवा खिलाड़ी सबसे आगे आते हैं। हाँ, तो थोड़ा नजर डालेंगे इन इन तीनों पे। लेट्स हैव अ लुक फर्स्ट एट रोहित राघव। ही इज अ डेंजरस रेडर, और एक छोटा सा वीडियो हम देखेंगे अभी ऑन रोहित राघव, वन ऑफ द स्टार्स ऑफ K7 कबड्डी। उसने बिल्कुल कमाल कर दिया, नॉट जस्ट एज रोहित अ रेडर, राघव। या एज एन ऑलराउंडर एज वेल, दोनों तरफ से। विकास, आई थिंक ही वाज वेरी इंप्रेसिव विद हिज रेडिंग स्किल, पर एज अ डिफेंडर भी वो इन इन पोजीशन से, राइट इन से वो इतने सारे टैकल्स किया, तो फॉर मी वेरी वेरी इंप्रेसिव। और आई एम श्योर कि यही वो वीडियोस हैं जिसको देखकर टीम्स ने वो डिसीजन लिए, वीडियोस, डेटा। और अभी अगर आप इस बार के ऑक्शन में, मुझे डेटा ड्रिवन वो जो बाइज है ना, वो बहुत ज्यादा देखने को मिले, चाहे वो विजेंद्र सिंह हो, जिनको आप उस कैटेगरी के रेडर को, उस युवा खिलाड़ी को। और मुझे अभी भी याद है सुहेल, मैंने पहली बार उनको 2018 में जो सीनियर नेशनल्स हुआ था, तब मैंने उनको खेलते हुए हैदराबाद में देखा था। एक युवा लड़का उस सीनियर नेशनल में 2 बार अनूप कुमार को उसने टैकल किया था। एंड वाह। आई रिमेंबर व्हेन आई केम बैक टू ऑफिस, आई टोल्ड अरविंद कि अरविंद, दिस इज वन प्लेयर वी हैव टू लुक
in future, and look where he is today. Yeah, बिल्कुल. I think excellent to see these three young guys already get picked up. Also, NYPs say बहुत सारी teams actually have added them as NYPs from K7. So great success from there as well. Let's take a look at our next youngster, another really really good young man to watch out for, Mohit Goyal. Yeah, Mohit और Goyal, very मोहित गोयल, सुहेल, अगर मैं मोहित गोयत की बात करूं तो मोहित में मुझे प्रदीप नरवाल की झलक दिखती है। और मोहित भिवानी से आते हैं, जहां और वो नवीन के गांव से ही आते हैं। तो जिस युवा खिलाड़ी के बीच में रहकर मोहित ने सीखा है और जिस कोच से सीखा है, नवीन और मोहित दोनों के कोच एक ही हैं। तो और आपने देखा होगा कि कैसे सजगता से मैट पे जाते हैं। जैसे प्रदीप नरवाल प्रेशर नहीं लेते, वैसे ही हमने मोहित गोयत को भी देखा है, मैट पे बड़े आराम से जाते हैं, राइट रेडर हैं, अंदर जाते हैं, टच करते हैं। और कैसे जैसे प्रदीप में ने हमने डुबकी देखा, यहाँ पे भी कई बार हमने देखा है उन्हें कि कितनी अचानक घूम के पलट कर डुबकी लेकर और वो मिड लाइन के पास पहुंच जाते हैं। कहीं से उनका पाँव निकलता है, कभी कभी हाथ निकलता है। बहुत ही सजग और फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में। आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा स्टार होने वाला है लड़का। Yeah, Bilkul, I agree with you 100%, Vikas. I think he's one of the stars of K7. I think it's great to see him get picked up in the auction as well. And I'm sure he'll do a great job with the Puneri Paltan franchise. And he gets to learn from none other than Anup Kumar. So wo toe touches to, आराम से अपने आप से आ जाएगा for him as well. But let's go to our third K7 star, the youngster again. This time it's Vikas. Yeah, Vikas, left corner defender, very similar, of course, name-wise to the man that is next to me, Vikas Gautam, and myself, Suhail Chandhok, bringing you this review. But Vikas, why don't you tell us a bit more about the other Vikas? या अगर विकास की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा कि कितना शानदार खेल है विकास का। Yeah, I think as a left corner defender, it's very important for a man to be cool, calm, collected, and I think that's what we always see with Vikas. He's a very relaxed customer on the court, and he stays on court for a long time as well. So good to see all three youngsters getting picked up by pro kabaddi teams, and I think they have a very very bright future. But let's move forward. Let's understand from the young men of K7 who got picked up for 6 lakhs each. Let's understand who the most expensive buys of the entire auction were, because there was some huge bidding wars going on over the last 3 days at the PKL Season 8 auction. Of course, we talked about Pradeep Narwal going for the most amount of money, but let's take you through the entire list to understand who the next most expensive players were as well, because we saw 2 crore patis. One, of course, Pradeep Narwal. दूसरे जो है सिद्धार्थ देसाई. We saw Arjun Deshwal go for almost a crore rupees as well. So Vikas, who are the big picks for you? सो फॉर मी अगर बात करें तो अर्जुन देशवाल और मंजीत, ये दो अनएक्सपेक्टेड बिड्स मुझे यहाँ पे देखने को मिले, जो हमारे टॉप 10 प्लेयर्स हैं यहाँ पे,
जो हाईएस्ट बिड हुए। और कहीं ना कहीं प्रदीप नरवाल का तो एक्सपेक्टेड था, पर मुझे शायद वो लग रहा था कि वो 2 करोड़ का आंकड़ा शायद क्रॉस करेंगे। बट शुरू से ही जैसे टीम्स ने बिड करना शुरू किया था, चाहे वो दीपक निवास हुडा हो, 1 करोड़ क्लब में अगर देखें तो सिर्फ 2 खिलाड़ियों ने जगह बनाई, प्रदीप नरवाल और सिद्धार्थ देसाई ने। और अर्जुन देशवाल और मंजीत मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक रहा, इन दोनों के लिए जो बिड्स हुए। बात करें सचिन की, सचिन का एक्सपेक्टेड था ये 84 के अराउंड, मैंने एक्सपेक्ट किया था अराउंड 70, बट 84 पे गया, 14 लाख मोर देन माय एक्सपेक्टेशन। रोहित गुलिया को फाइनली एक नया घर मेरा हरियाणा स्टीलर्स। और यहाँ पे रोहित गुलिया की भी अगर प्राइसिंग की मैं बात करूं तो मैंने जो एक्सपेक्ट किया था अराउंड समवेयर बिटवीन 60 to 70। एंड चंद्रन रंजीत यहाँ पे पवन सहरावत को यहाँ पे वो साथ देंगे। और उनकी प्राइसिंग, ये आप क्या बोलना चाहेंगे चंद्रन रंजीत के बारे में सुहेल? I think it's actually a fair price, Vikas. I think for Bengaluru Bulls अगर एक support raider मिल रहे हैं उस price में, तो अभी एक deadly raiding duo मिल गया. You've got पवन सरावत एक तरफ और अभी चंद्रन रंजित एक left raider भी है. तो they got the ability to be a lethal raiding unit. और अगर हम उस टीम पे ही नजर डालते हैं तो you have guys like the young defenders, और इसलिए दे हैड द एबिलिटी टू स्पेंड मनी ऑन रेडर्स. तो चंद्रन रंजित और पवन सरावत एक रियल लीथल रेडिंग यूनिट अभी बन गए बेंगलुरु बुल्स के लिए. पर इफ यू लुक एट द रेस्ट ऑफ दैट स्क्वाड, दे हैव यंगस्टर्स राइट कॉर्नर में, लेफ्ट कॉर्नर में, तीनों तरफ कवर्स में भी very young guys who can come through. But these were the top raiders and defenders. Most expensive raiders: Pradeep Narwal, Siddharth Desai, Arjun Deshwal was a late entry. Most expensive all-rounders: Manjeet at the very top. Again, this talks about how the young men are getting more money than the big names. Deepak Niwas Hooda doesn't even feature in the top 3 most expensive all-rounders. But let's start here. Let's take a look at each team, team by team, and start with the Bengaluru Bulls. We also have an overall Kabaddi Adda rating. We've taken many parameters to come to that overall rating. Our rating for the Bengaluru Bulls is 7.5 out of 10. And let's just explain that, because I'm going to start with the defense. We rated the defense 3 out of 5. I think because the covers are a little bit weak. I think for me, Ziaur Rahman, Ankit and Mahinder, the 3 left covers. Mahinder for me becomes the first choice left cover. Right cover thoda weak hai mere liye. Vikas is maybe the one man that you could look for there. But for me, a little bit, the right cover is a slightly weak place, and so too the right corner. So when you have a good right raider, I think they might expose the right side of that defense. Therefore, the defense rating is a little lower than I would have thought. लेकिन विकास, मेरे लिए अटैक का रेटिंग बहुत बहुत हाई है, क्योंकि पवन सरावत है, बंटी, दीपक नरवाल, अबोल फजल एंड ऑल्सो चंद्रन रंजित, जीबी मोरे, डोंगे ओनली. तो रेडर्स तो पैक्ड है इस टीम में. नो डाउट सुहेल, अभी पवन को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे बंटी और दीपक नरवाल, और साथ में मेरे लिए जो प्लस पॉइंट है यहाँ पे वो चंद्रन रंजीत है. चंद्रन रंजीत ने अगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली में नवीन का साथ दिया था, और दिल्ली में अगर बात करें तो सबसे कम उन्होंने डू और डाई रेट्स जैसे मोमेंट्स में टीम को ढकेला, वहां पे चंद्रन रंजीत का रोल बहुत ही बड़ा था. तो यहाँ पे पवन सहरावत को 3 बड़े ही शानदार सपोर्ट रेडर्स मिल चुके हैं, चंद्रन रंजीत, बंटी और दीपक, जो टीम को बहुत ही खतरनाक बनाती है. Yeah, I think therefore overall a good team. I think one of the stronger teams we've seen at the end of the auction. So let's move forward into our next team as well. They've picked up obviously 15 players. Uske upar, remember, minimum is 18. They'll have NYPs that fill in the rest of their team as well. So they've done a good job. I think Bengaluru Bulls should be pretty happy with their auction. And we'll move next to the Bengal Warriors, because that's another team that was very impressive for me. I think when you look at the Bengal Warriors coming into the auction, they were more impressive than what they did at the auction. I think they had a little bit of a disappointing auction for me, Vikas, from a defense perspective. Rating, though, I think is one of the most sorted teams. If you look at the rating options, you have already had Nabi Baksh and Maninder. Fir, you've added Sukesh Hegde, Ravinder Kumawat, who was already retained. And then for me, watch out for this young man. Akash Pikal Munde is from Maharashtra. I've seen a lot of videos of him, Vikas, and I think he's a really, really good raider to watch. He's a left raider as well. Also, they've added Rohit Raghav from K7 and Rishank Devadiga. So, Rishank, I know a lot of teams were not looking for, but I think Rishank Devadiga still has a lot of fight left in him. So, for me, as a raiding unit,
this is a 3.5 or 4 for me as an attack. लेकिन डिफेंस में कवर्स थोड़ा वीक है विकास. विजिन तंगदुरै एंड दर्शन और सपोर्ट नहीं है उनके पास. एंड कॉर्नर्स अगर देखे जाएं तो कॉर्नर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. यू गॉट अबोजर एंड रिंकू नरवाल, सचिन विंटला एज अ सपोर्टिंग कॉर्नर एज वेल. लेकिन कवर्स थोड़ा वीक है मेरे लिए, एंड दैट्स व्हाई फॉर मी द डिफेंस रेटिंग इज ओनली 2.75. और कवर्स के अलावा अगर मैं बात करूं सुहेल, तो यहाँ पे राइट कॉर्नर में आबोजर के अलावा मुझे मनोज गौड़ा और रोहित बाने दो नए खिलाड़ी हैं. इसके अलावा मुझे कोई सेकंड ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है. हालांकि लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे सचिन विटाला तो जरूर हैं, और उन्होंने हाल ही में अभी कर्नाटका के लिए सीनियर नेशनल्स भी खेला था. तो और बात करें कवर्स की, तो जैसा कि आपने बताया दर्शन और विजिन थंगदुरै, अगर पिछले सीजन की बात करें, हालांकि यहाँ पे कवर में नबी बख्श भी होंगे, लेकिन उसके अलावा आपके कवर्स नो डाउट काफी वीक हैं पिछले सीजन से अगर कंपेयर करें तो. Yeah, I Going think to the next overall, team. therefore, yeah, I think we've got to go forward to the Dabang Delhi squad, Vikas. So yeah, I think Bengal Warriors depends on what they do with their NYPs as well. Lekin, overall, I think they've had an okay auction when they came into the auction. Before that, I think they looked a lot stronger than they do at the moment. So maybe they could have done a bit better with their defense. So I think that's the only thing that for me could have worked better. But let's go forward. Let's go forward towards the Dabang Delhi unit. Because I think this is actually one of the better teams overall. अगर हम इस टीम पे थोड़ा नजर डालेंगे तो अटैक बहुत बहुत स्ट्रांग है. You've got the likes of Naveen Kumar obviously, and I think when you look at the rest of that team, Ajay Thakur अभी ऐड किया है, Vijay, Ahmad Sadagatnia, Sushant Sales. So you've got raiding options, but defensively also they have experience. Jiva Kumar एक तरफ, Sandeep Narwal, Joginder Narwal. So defensively also they look pretty good overall. नो डाउट ये टीम बैलेंस नजर आ रही है सुहेल, बट अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं ये मुझे तमिल थलाइवर्स सीजन 7 की याद दिला रही है ये टीम. कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मुझे सीनियर्स, चाहे वो बात करें मंजीत चिल्लर, संदीप नरवाल, जोगिंदर नरवाल, और आपने अजय ठाकुर को भी लिया है, तो मुझे मैट पे 4 कैप्टन्स भी नजर आ रहे हैं. तो कहीं ना कहीं ये परेशानी का सबब भी बन सकती है दबंग दिल्ली के लिए. ओवरऑल बैलेंस टीम है, बट हाँ बहुत कुछ करना पड़ेगा यहाँ पे हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको. Because I completely agree with you, and I think that for me is going to be a problem. I think Dabang Delhi KC management के लिए एक मुश्किल काम है, क्योंकि संदीप नरवाल एक तरफ, जोगिंदर नरवाल दूसरी तरफ, अजय ठाकुर, Yeah. मंजीत चिलर, ये सब पर्सनालिटीज है कबड्डी में. एंड हमने देखा है पास्ट में, अगर तमिल तलाइवास को देखा था या तो पुनेरी पल्टन बिफोर दैट, whenever there are big पर्सनालिटीज एक ही टीम में, तो द जूनियर प्लेयर्स गेट लॉस्ट. और नवीन कुमार जो है बीच में, उनका पर्सनालिटी बाहर नहीं आएगा, एंड आई थिंक दैट फॉर मी इज अ लिटिल बिट ऑफ अ डेंजर, क्योंकि यू वांट समवन लाइक नवीन कुमार टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ, और वो एक्सप्रेशन बाहर आने का थोड़ा मुश्किल लगेगा व्हेन यू हैव सच पर्सनालिटीज इन योर टीम. सो आई थिंक दबंग दिल्ली ऑन पेपर इज अ गुड टीम, बट I think it's going to be very tough to manage all the different egos and personalities in this Dabang Delhi unit. So, yeah, I think overall we've rated them 7 on 10, but I would actually maybe even subtract half a point or 1 point there for the management and how much work they're going to have to keep that team in unison, because I think that we've seen in the past is a big challenge for a lot of the teams. So let's move forward. Let's go to this side of the country, to Gujarat, and take a look at the new look Gujarat Giants, because they've made some critical buys as well. I think they missed out on a few things, but overall we have rated them 6.5 out of 10, mostly because their defense is very strong. Defense के लिए हमने 4 out of 5 points दे दिया है, because look at their options. Right corner में अंकित, रविंद्र पहल, हादी और श्राक, all 3 good options. Left corner में गिरीश शर्नाक, experience, सुमित youngster. फिर covers में सुनील कुमार, परवेश बेंसवाल, and they've added Suleiman Pelwani. So defensively they are one of the strongest defensive units in the entire league. Lekin attack mein, I just think they are lacking a little bit. They have Ratan, who is actually a really good young man to watch out for. He's coming through from the nationals also. We saw really impressive performances. Lekin uske alawa, we don't really have so much rating. I'm surprised that they didn't retain someone like a Sachin, because Mahendra Rajput is very slow on the turn. Harmanjeet Singh, inexperienced. Sonu, Pardeep Kumar, Ajay Kumar, all untested in that sense. तो मेरे लिए अटैक में बहुत बहुत कमजोर लग रहे हैं.
नो डाउट अब यहाँ पे देखना ये होगा कि क्या छिपा के रखा है गुजरात जाइंट्स ने उस फॉर्चून को वापस लेकर आने के लिए। क्या वो युवा एनवाईपीज हैं जिनके नाम अभी यहाँ पे क्लियर नहीं हुए हैं? क्योंकि अगर अटैक की बात करें तो अटैक तो बिल्कुल भी धार नहीं है अटैक में। महेंद्र गणेश राजपूत पिछले 2 सालों से हमने खेलते हुए देखा नहीं उन्हें। यहाँ पे रतन नो डाउट एक अच्छे प्लेयर हैं, और अभी देखना ये होगा कि इस बड़े प्लेटफॉर्म पे उनका परफॉर्मेंस कैसा होता है। अगर बात करें डिफेंस की, और आपने जैसा कि बताया 5 में से 4 अंक दिए हैं, और सुहेल मैं तो ये देखना चाहता हूँ गुजरात वर्सेस दिल्ली के जितने मैचेस हैं मैं एक भी मिस नहीं करने वाला हूँ। आई वांट टू सी रविंद्र पहल अगेंस्ट नवीन, क्योंकि नवीन हमेशा रविंद्र पहल के अगेंस्ट फेल हुए हैं। अभी ये देखने वाले मुकाबले होंगे गुजरात वर्सेस दिल्ली के। Yeah, I think that'll be a great battle. I think Naveen hopefully will still find a way through. Now Ravinder Pahal, even in the nationals and leading up to the auction, he's been excellent. That's why Ravinder Pahal was still such a sought after defender coming into this. But next, let's go to Haryana. Haryana Steelers, again a very well managed team. I think the management has done a good job yet again to choose a strong side. Overall, we've given them quite a strong rating of 7 out of 10. One of the top rated teams for us. क्योंकि अगर हम देखे जाए पहले अटैक पे हम थोड़ा ध्यान देंगे, बिकॉज अटैक में विकास कंडोला एक तरफ, यू गॉट विनय विकास चिल्लर एंड ऑल्सो इस्माइल मकसूदलू, देन यू गॉट रोहित गुलिया who went for a lot of money. I think he was a little bit too expensive anything, and you got Ajay Gangas as well. So I think the attack is quite sorted, and also defensively you see some of the names and they are new names. Lekin Brijendra Singh Chaudhary I think is one of the most talented right corners who are there in the country at the moment. Hamid Mirza, I watched him at the Dubai Masters in 2018 because और जब मैंने उनको देखा था दुबई में प्लेइंग फॉर ईरान ऑन द राइट कॉर्नर, वो बहुत ही शानदार डिफेंडर है एंड ही हैज द एबिलिटी टू स्टॉप द बेस्ट रेडर्स इन द बिजनेस. अच्छे एंकल होल्ड है उनके पास, तो दे हैव अ गुड कॉर्नर कॉम्बिनेशन. सुरेंद्र नाडा भी है, चंद सिंह भी है. फिर कवर्स में रवि कुमार हैज हैड अ गुड सीजन लास्ट टाइम अराउंड. Vikas Jaglan also a good defender. So I think overall Haryana Steelers have done a pretty good job coming into the auction. 14 players, they have after the auction, और उसके ऊपर they will pick NYPs also. So Haryana I think have done their homework. They've come in with a good team, and I think kudos to Rakesh Kumar and the entire management. और यहाँ पे सुहेल अगर एक बार फिर देखें तो रेलवेज की जो जोड़ी है यहाँ पे विकास खंडोला और रोहित गुलिया की, वो दोबारा एक साथ खेलेंगे। इसके पहले रेलवेज में वो एक साथ खेलते हैं और रेलवेज हमेशा जीतती आ रही है सीनियर नेशनल्स। और जैसे कि डिफेंस में आपने सुहेल बताया, आपने कॉर्नर्स की बात की, पर मैं कहीं ना कहीं कवर्स से बहुत ज्यादा सहमत नहीं हूँ। एक तरफ आपके पास रवि कुमार है और राजेश नरवाल है। राजेश नरवाल हालांकि अभी अभी जो हरियाणा में बहुत सारे जो लोकल टूर्नामेंट्स हो रहे थे उन टूर्नामेंट्स में राजेश नरवाल का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था, लेकिन पीकेएल में पिछले साल उन्होंने खेला नहीं था, पिछले सीजन में वो थे नहीं। और अगर विकास जगलान की बात करें तो वो उनका परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे कवर्स में अगर कुछ एनवाईपीज जिन्हें वो लेकर आने वाले हैं तो उस पर नजर हमें बनाए रखनी होगी। कवर्स कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि उतने स्ट्रांग नहीं है हरियाणा स्टीलर्स के, और नजर होगी ब्रिजेंद्र सिंह चौधरी पर, क्योंकि हमने देखा सीनियर नेशनल्स में जिस तरीके से वो लगातार कामयाब हुए पवन सहरावत को रोकने में। तो बेंगलुरु बुल्स के अगेंस्ट हरियाणा स्टीलर्स का परफॉर्मेंस कैसा होता है, उनके डिफेंस का परफॉर्मेंस कैसा होता है, वो देखने लायक होगा। Yeah, I think overall, really good to see this team come together because Haryana Steelers, I think one of the better outfits yet again. हर एक season वो थोड़ा improvements कर रहे हैं, and I think we'll see those improvements continue in this season as well. Let's move to the inaugural champions of Vivo Pro Kabaddi. That is of course the Jaipur Pink Panthers. They had a very busy auction. अगर इस टीम को हम देखे जाए तो Arjun Deshwal for me was the big pick. I think a little bit too expensive still. 90 plus lakhs for Arjun Deshwal. I know he had a good tournament coming in. A lot of people will say that's good value. And I think they've spent their money well. Attack and defense, both for me 3.5 out of 5. Because when you look at the attack overall, Deepak Nivas Hooda, Arjun Deshwal, Nitin Rawal, Naveen Bazad, Sushil Gulia, Amin Nosrati, that's a really strong rating combination. और फिर अगर डिफेंस पे हम देखेंगे तो संदीप डोल एंड अमित हुड्डा, गुड कॉम्बिनेशन. Dharmraj Cherlatan for experience, who can also be a good leader in this team. And I actually think maybe if he plays on the mat, they should give him captaincy to remove it from Deepak Nivas Hooda and don't give him pressure. Or फिर covers में Vishal was excellent last season.
एंड उनके साथ पवन टीआर आई थिंक विल बी द फर्स्ट चॉइस. अमित भी ठीक है in that team. So overall, they look like one of the most balanced teams in the entire league. नो डाउट सुहेल, दे आर वन ऑफ द बैलेंस्ड. लेकिन यहाँ पे एक बार फिर जैसे जब हमने प्रीव्यू किया था तो वहाँ हमने बात किया था कि क्या जयपुर पिंक पैंथर्स संदीप धुल को रिटेन करेंगे. एंड थोड़ा सा टफ होगा बिकॉज हमने लास्ट सीजन भी देखा है कि संदीप धुल की मूड स्विंग्स ने कितनी बार जो गेम्स हैं उनको बदला है और उसकी वजह से निराशा हाथ लगी है जयपुर पिंक पैंथर्स को. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उनको थोड़ा टफ तो जरूर होने वाला है टीम को मैनेज करने के लिए. ओवरऑल बहुत ही बैलेंस टीम है. आपके पास अन्ना भी है और जैसा कि आपने बताया यहाँ पे आप कप्तानी का भार अन्ना पे दे सकते हैं. And I think Vikas, you made a good point. अगर संदीप धुल के पास कोई मूड स्विंग्स आ जाते हैं तो धर्मराज चेरलातन can play the left corner, and I think that's a big advantage, and maybe that's why they picked up someone like Anna who is such a stable force. तो अगर कोई भी डिफेंडर फॉर्म में नहीं है तो धर्मराज चेरलातन can fill any role, and I think that's why having someone like him in the squad is so important for the Jaipur Pink Panthers. So yeah, I think overall very steady team. I think a good looking team overall for Jaipur. But from the Pink Panthers, let's go to the men in green next, because another champion team, the most successful team in Pro Kabaddi, Patna Pirates. लेकिन इस बार I think Patna Pirates, Vikas, they have a lot of work to do. प्रदीप नरवाल अभी टीम में नहीं है, और उसके ऊपर अगर हम देखे जाएं तो it leaves a lot to be asked. Where is the defense? What is going on? पिछले सीजन भी हमने देखा कि डिफेंसिवली they really struggled, और इस बार भी नीरज कुमार, सौरभ गुलिया राइट कवर, लेफ्ट कवर में really there's no dedicated defender. I know that Rammeer Singh, the coach, will look at a lot of NYPs to fill their positions as well. But even the corners, you have Shubham Shinde, Sajan and Sunil. Left corner Shadlui, who is a young man from Iran. कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रो कबड्डी में. संदीप is a valuable pick as well, but experience is missing in this team. Right in में मोनू गोयत और मोनू लीड रेडर्स, उनके लिए जैंग कुनली, प्रशांत कुमार राय. तो मेरे लिए इस टीम अगर हम उन पे हम नजर डालते हैं तो मेन रेडर्स है मोनू गोयत, जैन कुनली और प्रशांत राय, एंड दैट्स नॉट फॉर मी अ स्ट्रॉन्ग रेडिंग यूनिट. इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव यूनिट. तो इस टीम में थोड़ा स्ट्रगल्स हम जरूर देखेंगे. सचिन ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी अ की मैन इन टर्म्स ऑफ रेडिंग एज वेल. नो डाउट यहाँ पे पटना पायरेट्स की अगर बात करें तो मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं होता कि 3 बार ये टीम चैंपियन रही है और पिछले 3 ऑक्शन से लगातार यहाँ पे पीछे की तरफ ये टीम जा रही है. बात यहाँ अटैक की करें तो नो डाउट अटैक में थोड़ा सा धार जरूर है क्योंकि आपके पास सचिन और मोनू गोयत हैं और प्रशांत कुमार राय काफी यहाँ पे वैल्यूएबल साबित हो सकते हैं पटना पायरेट्स के लिए. लेकिन वापस अगर डिफेंस पे जाते हैं तो पिछली बार भी हमने देखा था कि टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई थी डिफेंस में, और इस बार फिर डिफेंस एक बार सवाल खड़ा करता है पटना पायरेट्स के ऊपर उनके जर्नी पे, सीजन 8 के इस जर्नी पे. Yeah, I think overall, I think they're a better raiding team than they are a defensive team. I would actually maybe give them 3 out of 5 for their raiding unit, क्योंकि मोनू गोयत भी है, सचिन तंवर भी है और प्रशांत कुमार राय है. मोनू गोयत is now a little bit out of form. एक one dimensional raider बन गए थोड़ा सा. तो I think he's become predictable for defenders. वो thigh hold के लिए जाते हैं और अटैक करते हैं उनको. तो that's where I think they have to change things up a little bit. Maybe having Sachin and Prashant Rai gives a little bit of variability. Monu will have to still play an all-rounder role Patna के लिए. तो I think defensively वो थोड़ा weak है, and I think that's what they'll have to work on. Rammeer will have his hands full as coach as well, but I don't see them going too far in the competition. So let's see. I think it'll be an interesting campaign for Patna. But let's move from one PP to another PP, Puneri Paltan, and I think Puneri Paltan had a good auction overall. अगर इस टीम को देखे जाए तो you look at the overall picture. They've got good defense, they've got decent raiders, and I think overall defensively we've given them 4 out of 5. Overall rating 7.5 out of 10. That's one of the strongest ratings we have given any of the teams. So let's just sort of look at this team a bit more, because they've got Baldev on that right corner, they've got Vishal Bhardwaj on the left corner. वो तो हिमाचल का corner combination है, तो I think that's a very strong corner combination. फिर उन्होंने सोमबीर को भी ऐड किया है राइट कॉर्नर में. तो ऑप्शंस भी है बैकअप राइट कॉर्नर. सोमबीर has been in terrific form in the nationals coming in. तो डिफेंसिवली they look really sorted, क्योंकि कवर्स में भी संकेत सावंत और बाला साहब, we saw them last time around do a good job. Maybe covers का थोड़ा सा there will be a little bit of a tough outing because they're not the most consistent.
Hadi Tajik bhi hai, he can play in the right corner as well. But their rating, if you look at the rating options, they have Pawan Kumar Kadyan, they have a Rahul Chaudhary and a Nitin Tomar as left raiders. They also have Pankaj Mohite and Mohit Goyat from K7s. So I think, rating wise, they have a good unit, but again, क्वेश्चन मार्क्स विकास, क्योंकि राहुल चौधरी के फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स, नितिन तोमर के फिटनेस के ऊपर क्वेश्चन मार्क्स, पवन कुमार कादियान के ओवरऑल प्ले के ऊपर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क्स है. पंकज मोहिते फॉर मी एक्चुअली कुड बी वन ऑफ द बेस्ट रेडर्स इन दिस टीम. तो इसलिए फॉर मी डिफेंसिवली दे आर अ बिट स्ट्रॉन्गर देन रेडिंग, बट ओवरऑल वेरी बैलेंस टीम. नो डाउट. और हर साल के बात ही इस साल भी, इस सीजन भी ऑन पेपर पुनेरी पलटन बहुत ही स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, बैलेंस टीम नजर आ रही है, और ये हर हर सीजन में हमने देखा है. पर ड्यूरिंग द सीजन क्या होने वाला है, एक आपने फिर से इंजरी प्रोन नितिन तोमर को, हालांकि जिस प्राइस बैंड में आपने एफबीएम किया वो नो डाउट काफी ही अच्छा था, लेकिन आपके पास अटैक में सिर्फ अभी पंकज मोहिते और आप सुहेल, आप ये भूल रहे हैं कि यहाँ पे मोहित गोयत भी है जो हमारे K7 टूर्नामेंट के फाइंड है, और यहाँ पे मोहित गोयत भी खेलेंगे पुनेरी पलटन के लिए. और राहुल चौधरी और नितिन तोमर दो सीनियर प्लेयर्स होंगे इनका साथ देने के लिए. तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये सीजन पुनेरी पलटन के लिए इंजरी फ्री होगा. नितिन तोमर के लिए बात कवर्स की करें तो एक बार फिर शेकी कवर्स हैं, और बाला साहब जादव को हमने हालांकि खेलते हुए देखा है बीच के कुछ टूर्नामेंट्स में. संकेत सावंत भी यहाँ पे इंजरी के बाद वापसी कर रहे हैं. तो मेरे लिए तो फिंगर्स क्रॉस्ड है पुनेरी पलटन के लिए. मेरा तो आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड. आई वांट नितिन तोमर बैक ऑन द मैट फॉर द एंटायर सीजन. Yeah, I want to see Nitin Tomar fully fit, and I think all the fans want to see Nitin Tomar fully fit, क्योंकि अगर Nitin Tomar fully fit है तो he is a class raider to watch. और फिर पुनेरी पलटन के पास एकदम स्ट्रॉन्ग टीम है, क्योंकि नितिन तोमर, राहुल चौधरी, पंकज मोहिते एक तरफ से they look like a really good unit. So, and Pawan Kadyan as a supporting raider as well. But now let's move to the south. The Tamil Talaivas, another team that needs success, that is craving success, and because I struggle with this team because I'm a Chennai boy, I'm a local when it comes to Tamil Nadu, but again I think they didn't really have the best auction. They had the most money of all teams coming into the auction, but I don't think they leave with one of the strongest teams. In fact, I think they leave with one of the weaker teams. I hope they spring a surprise and they change my opinion and all of our opinions. But think about it, Ajit Kumar was at 25 lakhs, who went to Umumba. They could have retained him with an FBM card at 25 lakh rupees. They chose not to do it. So agar हम इस टीम को अभी देखें तो you've got Prapanjan, who is a great buy for them. You've got Manjeet, also a good buy. You've got Atul MS, Ajinkya Pawar. But given that you had more than 4 crore rupees coming in, I really think they've not spent their money well. Surjit Singh was very expensive. Where is the rest of the defense? You have a right corner in Santa Paraselvam and Sagar. You have a left corner in Sagar, Krishna and Himanshu. दोनों तरफ से there's no stability. Covers में सिर्फ सुरजीत है. Apart from Surjit, I don't see any stability yet again. It's all youngsters, untested youngsters completely. Anwar, Said Baba, Raiders में भी अगर देखे जाए तो you've got Prapanjan, you've got Manjeet, and then nothing. So for me, as a team that came in with the most money into the auction, I think they had a pretty poor auction because again, they leave with a very average looking team on paper. नो डाउट सोहेल, हर बार की तरह इस बार भी तमिल थलाइवास की अगर बात करें तो ऑक्शन की अगर बात करें, कई बार मेरे साथ भी होता है कि मैं बहुत सारे पैसे लेकर मार्केट जाता हूँ और बहुत सारे मैं इम्पल्सिव परचेजेस करके वापस आता हूँ. फिर मैं सोचता हूँ अच्छा मैंने खरीदा क्या. तो कुछ ऐसा ही हुआ है तमिल थलाइवास के साथ भी. पैसे बहुत थे, ऑक्शन में गए और कुछ ऐसा उन्होंने टीम को लिया. बात अगर कॉम्बिनेशन की करें तो आपने मंजीत को लिया एक तरफ, आपने प्रपंजन को लिया, बहुत सारे पैसे खर्च किए दो खिलाड़ियों पे. कवर्स में आपने सुरजीत पे बहुत सारे किए, बट इनको कॉम्बिनेशन आप क्या देंगे टीम में? सुरजीत सिंह को आप कॉर्नर क्या दे रहे हैं? आपकी कॉर्नर से स्ट्रांग नहीं है. आप मंजीत आपने एक तरफ लिया, एक तरफ प्रपंजन लिया, बट इनको ये बेसिकली एक बहुत अच्छे सपोर्ट रेडर्स हैं, आपके मेन रेडर्स नहीं हो सकते हैं ये. तो ये टीम स्ट्रगल करने वाली है एक बार फिर से सुहेल, क्योंकि मुझे कहीं भी कॉम्बिनेशंस नजर नहीं आ रहे हैं, चाहे वो मंजीत को सपोर्ट करें, सुरजीत को सपोर्ट करें या प्रपंजन को सपोर्ट करें. Yeah, I agree with you because I think even when you look at the best defenders on their own, whether it's Fazal Atrachali, whether it's Abozar Megani, whether it's a Vishal Bharadwaj or a Ravinder Pahel,
they can only do well when they have support. When they have support from the covers, when they have support from the opposite corner. Like you said, इधर तो काफी सुरजीत सिंह उनके ऊपर आप रिलाई मत कर सकते हैं क्योंकि you don't have the support. नहीं कर सकते उनके ऊपर सारे reliance because you don't have a left corner, you don't have a right corner that is known. Sagar Krishna is a decent left corner, no doubt. Right corner पे Santapana Selvam, we've seen a lot of mistakes from him. Sagar se bhi we've seen lots of mistakes. Left cover में कोई नहीं है. Right cover में Tuin Taraftar from Bangladesh, we've seen him. He's okay. He's not great, So I don't see how this team went in with so much money. And I like what you said. It's like going to the supermarket with all the money in the world, but having zero clarity in what exactly you want. And I think that's why sometimes you have to have absolute clear plans and go in and say, chalo, even if that person comes in at a cheaper amount, we'll go with them. And we don't need big names. We just need a solid team. And with the money that they had, they could have actually bought 4-5 guys and had backups. Dharmraj Cherlatan went at 20 lakh rupees. So, the options were there to add the experience and keep them in your team. But unfortunately, I don't think they've had the best auction. Let's go forward into the next team because the Telugu Titans are another team that need to find success again. They've struggled. Given the star quality that Telugu Titans has season after season, you expect them by now to have already won a title. Rahul Chaudhary, when he was at his very best, was with Telugu Titans. Siddharth Desai, जब वो एकदम Mumbai से Telugu Titans आए थे, तो he was at the top of his game. They still didn't go forward into the playoffs. So this is a team that has constantly struggled. लेकिन इस बार उनके attack strong hai. When you look at the entire overall picture of their attack, sorry, we'll get our names out of the way in just a second. But when you look at their attack overall, you've got Siddharth Desai, you have Amit Chauhan, you have Rakesh Gowda, you have Rohit Kumar, you have an Ankit Beniwal and Rajneesh. Now, Ankit Beniwal, Rajneesh become your support raiders with Rakesh Gowda as well. But you have a strong raiding combination in Siddharth Desai, who's your multi-point scorer, और फिर रोहित कुमार वो जो सिंगल पॉइंट लेते हैं. तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इन सिद्धार्थ देसाई एंड रोहित कुमार, और फिर सपोर्ट रेडर्स भी हैं राकेश गौड़ा, अंकित बेनीवाल और रजनीश से. सो दे हैव अ रियली गुड रीडिंग यूनिट. डिफेंसिवली एक्सपीरियंस लैकिंग है इस टीम में. संदीप obviously is a really good buy coming back to Telugu Titans. Sandeep Khandola, I think he is going to play a key role. उनके फॉर्म कैसे हैं वो हम देखना चाहिए. पर ऋतुराज कौरवी is prone to make many mistakes. So for me, right side of the defense thoda sa weak hai. Surendra Singh also prone to making many mistakes. We saw him make so many errors with U Mumbai Vikas. So right side of the defense mere khayal se thoda mistake prone hai, and I think that's where the test is going to come defensively for this Telugu Titans outfit. सुहेल, नो डाउट एक बार फिर से तेलुगु टाइटंस, मुझे उनका डिफेंस बिल्कुल भी मुझे बैलेंस नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि एक तो आपने अपने जो आपके जो कॉर्नर्स थे उनको किसी को आपने रिटेन नहीं किया, और उनकी जगह पे जो आप कॉर्नर्स लेकर आए हैं ये युवा खिलाड़ियों को आप लेकर आए हैं. और यहाँ पे मैं पहले भी बात कर रहा था, कॉम्बिनेशंस की बात हम कर रहे थे तमिल थलाइवर्स की. तो एक तरफ आपके लेफ्ट कॉर्नर में संदीप हैं जो युवा खिलाड़ी हैं, और सुरेंद्र सिंह है. दोनों के बीच यहाँ पे सुरेंद्र सिंह के अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको एक एक्सपीरियंस्ड कॉर्नर चाहिए जो यहाँ पे मिसिंग है. तो कहीं ना कहीं ये तेलुगु टाइटंस का ये डिफेंस बहुत ही स्ट्रगल करने वाला है. नो डाउट उनके अटैक में धार जरूर है, क्योंकि आपके पास सिद्धार्थ देसाई हैं और आपने रोहित को लिया हुआ है यहाँ पर, तो कुछ धार तो है वहां पे, पर मैं वहां पे भी इनको पूरे नंबर नहीं दूंगा अटैक में. बट हाँ, यहाँ पे डिफेंस नो डाउट काफी स्ट्रगल करने वाला है, चाहे भले ही आपने संदीप को लेफ्ट कॉर्नर में रखा हो या सुरेंद्र को कवर में. Yeah, so Telugu Titans, I think they have a big task. They have to really play out of their skin to maybe try and go all the way. Playoffs ka chances hai rating unit ke sath, but defensively they need to shore up. I think that's going to be the tough task. But let's move to a team that's had plenty of success in the past. A team that was a season 2 champions, U Mumbai. A team that is very different coming into this because जैसे हमने कहा कि तमिल तलाइवर्स ने इतने सारे पैसे डाल के क्लैरिटी के बिना शॉपिंग किया था. यू मुंबई वर द ऑपोजिट. दे हैड द सेकंड और दे हैड द लीस्ट मनी गोइंग इन, लेकिन दे वेंट विद आई थिंक अ लॉट ऑफ क्लैरिटी. बट अगर हम सोशल मीडिया पे देखे जाए तो आई वाज एक्चुअली लुकिंग एट ऑल द टीम सोशल मीडिया आफ्टर द ऑक्शंस टू सी व्हाट द फैंस थॉट ऑफ ईच टीम. द फैंस हैव स्लैम्ड दिस टीम because they said, "Arey yaar, you have let go of all the top names and you've gone with completely young team here, right?" I think when you look at this team, you have Fazal, you have Abhishek Singh,
and then you really have a lot of youngsters. Lekin I think they've stuck to their guns. They think they have a plan. They are investing in youth. The one thing that this team has done in the past is they've developed new stars. Abhishek Singh was a star that was developed with them. Arjun Deshwal was a star developed with them. Siddharth Desai was a star that was developed with them. So I think that they maybe have gone with their Moneyball strategy completely because they have some star value in their NYP picks. And I think in some of these names that they picked up. Now, you look at the rating unit, why we have given them 3 out of 5 is because you have Ajit Kumar, who I think was an absolute steal at 25 lakhs, and you've got Abhishek Singh. So left-right combination udhar to mil gaya. Jashandeep Singh and Rahul Rana are two youngsters that we have seen a lot of coming through the ranks, and they expect a lot out of them. Or फिर Ajinkya Kapre, we saw a lot of him towards the back end of the season last time, and he is developing into a stronger raider. So they've added also Mohsin Maksudlu, who I think is a good all-rounder. Lekin defensively, I think this is actually a very decent team. You've got Fazal as a left corner, obviously, who is brilliant. You've got Pankaj as his understudy to learn from him. फिर रिंकू विकास रिंकू पे थोड़ा आप थोड़ा नजर डालो because you've seen him come through the tournaments coming into this tournament as well, and I think he is one of the most sought after defenders. We saw a lot of bidding wars for Rinku and for Sombir coming to this auction, and then you also have cover combinations of Harendra with Sunil Sidgavli, Ashish Sangwan and Ajit. बात रिंकू की करें सुहेल, तो रिंकू को हमने खेलते हुए देखा था गोटेगांव चैंपियनशिप में, और उसके बाद K7 के लिए नरवाल एकेडमी के लिए रिंकू ने खेला था. युवा लंबे कद के कॉर्नर और बहुत ही बेहतरीन है. उनके एंकल होल्ड्स और उनके डाइविंग एंकल होल्ड्स बहुत ही बेहतरीन है. तो मैं इस युवा खिलाड़ी पे तो दांव लगाने को बिल्कुल ही तैयार हूं, और यू मुंबा के लिए बिल्कुल ये राइट पिक है. लेकिन बात करें अगर यहाँ पे इनफैक्ट अटैक की भी बात करें, तो जो ये युवा ट्रायो है, अजीत, अजिंक्य, आपके पास है अभिषेक सिंह है. आई एम काउंटिंग ऑन देम. ये मनी बॉल टीम है इस टूर्नामेंट की. हालांकि सोशल मीडिया पे अगर सबसे ज्यादा नेगेटिव कमेंट्स आए मैंने देखे हैं तो वो यू मुंबा है. लेकिन यू मुंबा शायद हर साल के हर सीजन की तरह इस सीजन भी आपको आश्चर्यचकित करेगी. एंड आई एम काउंटिंग ऑन ऑल दीज यंगस्टर्स. Yeah, I've heard that वो जो NYPs है उनमें से they've got some very strong picks, and I think there's one raider who is 6 feet 4 inches tall. So I'm looking forward to seeing who this new pick is that they have as well. But I think it's going to be tough for U Mumbai. I think also because the risk always with when you have a young team like this is that when they play under pressure for the first time, a lot of these players have never played in PKL before. So वो pressure तो है उनके साथ, and I think Fazal Atrachali will have to manage that team well and extract the best out of those players. So it will be a challenging season. लेकिन वो तो Moneyball team ही है इस season भी, and I'm sure we will see those diamonds in the rough come from the U Mumbai team yet again. So let's go to our last team, the last and final team that we have to review here, and that is a team that for me actually is one of the strongest teams coming into this season. UP Yoda, they had a very good auction for me. Attack में अगर देखे जाएं तो they are, I think, the strongest team. You've got Shrikant Jadhav, left raider, Pardeep Narwal, phenomenal of course. Then you have Surender Gill, Mohammad Taghi, you have Sahil, Amit Kumar and Gulveer as well. I think they've got a really, really good raiding outfit. But outside of that, defensively also, they are so strong. Sumit and Nitesh, we saw what they did last time around. Ashu Singh is a great right cover. They have a few left cover options from their NYP program as well. So I think overall this team is very, very balanced. And I'm really looking forward to watching UP Yoda as a team this season because I think they have what it takes to enter the playoffs for sure. नो डाउट सुहेल. और इन जितने युवा खिलाड़ियों का अभी आपने नाम लिया, चाहे वो नितेश हो, सुरेंद्र गिल हो, गुलवीर सिंह हो, अशु सिंह हो, इन सभी खिलाड़ियों को हाल फिलहाल में मैंने खेलते हुए देखा है. इनफैक्ट जब अभी कोविड के दौरान खेल पे रोक लगा हुआ था, खेल नहीं हो रहे थे, उस दौरान भी जब बीच में ब्रेक्स मिले हैं, उस दौरान भी बहुत सारे टूर्नामेंट्स हुए, लोकल टूर्नामेंट्स. इन टूर्नामेंट्स में इन खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है. और सोने पे सुहागा ये है कि आपकी टीम में अब प्रदीप नरवाल हैं और साथ में श्रीकांत जाधव भी हैं. तो इस टीम को तो मैं फाइनल खेलते हुए देख रहा हूँ. और इन सभी युवा खिलाड़ियों को हमने गोटेगांव टूर्नामेंट में खेलते हुए देखा. यहाँ के कुछ खिलाड़ियों को यूपी में जो उनके अकेडमी में टूर्नामेंट हुआ था वहां पे मैंने खेलते हुए देखा था. तो बहुत ही शानदार फॉर्म में ये खिलाड़ी, और ये मैट पे तो तहलका मचाने वाले हैं. Yeah, I think it's going to be a really good season because overall अगर हम सारे teams को देखे जाएं तो actually there's no standout team.
We thought that when we saw the big names coming into the auction, we thought maybe some teams will blow the others apart because of the amount of money they had coming in. But as we saw, a lot of the most money didn't have a good auction. So अभी वापस balance तो आ गए इस auction के बाद, and I think going into this next season, it's going to be such a good season. The Mashal Sports team was saying that we can expect that mid-December will be when the season kicks off. So looking forward to that. Obviously, before that, we will have a lot of content coming to you from Kabaddi Adda. So make sure that you stay subscribed to our channel here. Head across to Instagram, head across to Facebook, and follow us on all those platforms. Follow Vikas and myself on Instagram as well at Vikas Gautam and Suhail Chandhok. So we can obviously have a really good set of discussions going in. But for now, Vikas, should we say goodbye to everyone? Because I think it's time for us to call it a day here. We've had a busy auction. We've been completely swarmed with some great comments. Please leave your comments under this video to tell us what you think is the strongest team. Because if you had to pick 2 or 3 teams, who are the strongest teams for you on paper? For me, it's UP Odha, Puneri Pulton, and Jaipur Pink Panthers. Yeah, I actually think it's similar for me as well. I think UP Yodha, Puneri Pulton, I would put maybe Jaipur alongside them, and also Bengaluru Bulls for me are a strong outfit. And I think my dark horse would be the U Mumbai team, because it all depends on whether their youngsters and the money ball strategy can work for them, because it's going to be a very interesting, I think, set of young players that we see shining through. So much to look forward to. Thank you all so much for joining us as well. From Vikas, myself, and the entire team at Kabaddi Adda. Hope you guys enjoyed this review. Please leave all your comments and tell us what you thought of the teams, where you agree with us, where you don't agree with us, and we'll keep bringing you some great content right here at Kabaddi Adda. Until next time, it's goodbye from us. Thank you, everyone. Thank you for joining.